Hello students, today we will discuss our next one 3 pages of NCERT chapter number 1 we will start from page number 13. In the previous topic we have studied about the income and the other criterias, that how along with the per capita income there are so many another factors which are also important in order to compare the development level of the economies. Now the one more thing is there, activity 3, which is mainly related to the BMI. What do you mean by the BMI? That is the body mass index. With the help of this activity you will be able to understand that either a person is nourished or undernourished or overweight. How we can calculate it? It can be done with the help of BMI. Simply here is a requirement of two things: the weight of the person and the height of the person. Weight will be measured in terms of kg and the height will be measured in terms of meters. And then what will you do? You will adopt the step 2 of process, which is you will have to divide the weight by the square of the height. It means dividing weight divided by square of height. And if the answer will be less than 18.5, अगर आपका जो आंसर है वो क्या होता है 18.5 से कम आता है, then the person will be termed as undernourished. और अगर आपका जो आंसर है if it is more than 25, then the person is overweight. So this is the criteria which is not to be used or not applicable for the growing children. So with the help of this we can get about the health status level of the people of an economy. You can do this as an activity also. Next one thing is there, that is the human development report. In the previous topic we have studied that not only the level of income is important, but some of the another factors are also important, and the question arises, what are the another factors? Which are the another factors like the health and education indicators? As we were discussing in the comparison of Kerala and Punjab, in which we have studied about the infant mortality rate, life expectancy and net attendance ratio. On the basis of all those factors we were saying that the Kerala is much more better than the Punjab, rather than the indicator of the per capita income only. So here in order to measure the development along with the income, so many another factors are also used. For example, HDR or the HDI, Human Development Report, which is mainly published by the UNDP. It just published the HDI on the basis of the three things: the educational level of the people, the health status of the people, and the per capita income of the economy. No doubt it will be very interesting to see that how our India is at which status as compared to its neighboring economy as per the Human Development Report of 2006. Simply there are the 5 countries they have taken as an example: Sri Lanka, India, 6 countries are there. Along with the India, 5 countries are there: India, Sri Lanka, Myanmar, Pakistan, Nepal and Bangladesh. The first one thing is there, that is the per capita income. As per this, Sri Lanka is much more better. Then there is a life expectancy at birth. It means that on an average the life expected of a person in Sri Lanka it is 74, in India it is 64. Literacy rate for 15 plus year. Literacy means how many people are literate, the total proportionate out of the total population. Here in Sri Lanka it is 91 and in India it is 61. Gross enrollment ratio for 3 levels. 3 levels are here: primary education, secondary education and higher education. Beyond the secondary education, what is the total proportionate of the total population of enrollment of that people in these 3 kinds of education? Then now it is the HDI rank in the world. The Sri Lanka is having 93, India is at 126. It means out of the above thing we can say, don't it is the surprising that a small country, Sri Lanka is a small country, so Sri Lanka is much ahead of इंडिया इन एवरी रिस्पेक्ट, चाहे वो ग्रोस एनरोलमेंट रेशो हो, चाहे वो पर कैपिटा इनकम हो, चाहे वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एवरीथिंग इज़ ग्रेटर इन श्रीलंका रेदर देन India. As well as per the 2006 development report, India was having 126 rank, but Sri Lanka was having 93
3 rank in the all over the world. So many kind of the improvement have been suggested in calculation of the HDI and many kind of the new components also have been added, कि बहुत से नए components भी add किए गए हैं HDR बनाने में, but जो पहले से ही मतलब कि ह्यूमन की डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं. सो सिंपली वी कैन से ऑल दोज फैक्टर्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट विच आर मेनली रिलेटेड टू द सिटीजन ऑफ ए कंट्री, कि उनकी हेल्थ कैसी है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पोर्टेंट. Okay, now we will discuss about the last one topic of the chapter, that is the sustainability of development. This is very much important topic, and in which we will study about one of the, first of all I just want to tell you about one of the definition. We have not inherited the word from our forefathers, we have borrowed it from our children. What are you getting from this definition? They are saying कि जो word है वो हमें हेरिडिटी में नहीं मिला अपने प्रीवियस फादर से, ग्रैंडफादर से, बट हमने इसे अपने आने वाली पीढ़ी, अपनी फ्यूचर जनरेशन से बोरो किया है. सो सिंपल थिंग इज़ देयर, द कंसेप्ट इज़ देयर, दैट इज़ द सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट. विच एवर वे वी डिफाइन डेवलपमेंट, दे आर सेइंग कि जो सा मर्जी तरीका हम अपना लें, हम डेवलपमेंट को डिफाइन करें, अगर प्रेजेंट टाइम में एक कंट्री डेवलप है, देन कम से कम ऐसी डेवलपमेंट फर्दर भी जानी चाहिए, एटलीस्ट बी मेंटेन्ड फॉर द फ्यूचर जनरेशन, कि जो प्रेजेंटली डेवलपमेंट पाथ है, इट मस्ट ऑल्सो बी अप टू द लेवल फॉर द फ्यूचर जनरेशन, एंड नो डाउट दिस इज़ द डिज़ायरेबल. सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, वो कह रहे हैं कि 20th सेंचुरी के सेकेंड हाफ तक ऐसी सिचुएशन आएगी कि नंबर ऑफ साइंटिस्ट ने इस बात के लिए वॉर्न किया है कि जो प्रेजेंटली लेवल है, जो तरीका है लोगों का यूज़ करने का रिसोर्सेज को, या जिस तरीके से हम अपनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल. इट मीन्स दैट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम इन फ्यूचर फॉर द फ्यूचर जनरेशन. वी विल डिस्कस अबाउट द 2 एग्जाम्पल्स ऑल्सो हेयर. द फर्स्ट वन एग्जाम्पल इज़ ग्राउंड वाटर इन इंडिया. रिसेंट जो हमें एविडेंस पता चले हैं उससे क्या है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है वो नो डाउट दैट इज़ अंडर ए वेरी सीरियस थ्रेट, कि 300 डिस्ट्रिक्ट जो है वाटर लेवल जो है 4 मीटर से ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका है ओवर द लास्ट 20 ईयर्स, और नियरली 1/3 जो है वो कंट्री जो है वो उनके ग्राउंड वाटर रिजर्व्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रही हैं, ओवर यूज़ कर रही हैं. और अगर आने वाले 25 सालों में 60% कंट्री इसी तरीके से करती रही जैसे कि वो प्रेजेंटली वाटर को यूज़ कर रही है, तो it will create a problem for the future generation. And groundwater overuse is mainly found in the that kind of area where the agriculture is mostly existing, like the Punjab, western UP, hard rock plateau areas, central and south India, कुछ coastal areas हैं, कुछ ऐसे urban settlement में जो लोग ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं वो over usage कर रहे हैं. So groundwater is an example of the which kind of resource? Renewable. Renewable resources means which can be generate again with the help of some process, और we can say कि जो ऐसा रिसोर्स हो गया जो नेचर उसे रिप्लेस कर देता है टाइम टू टाइम. तो ग्राउंड वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज. दीज रिसोर्सेज आर रिप्लेनिश्ड बाय द नेचर एज इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स. चाहे ओवर फिर भी ओवर यूज़ हो रहे हैं, बट स्टिल इट विल ऑल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम. तो फॉर एग्जाम्पल कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जैसे कि ग्राउंड वाटर है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंड वाटर यूज़ करते रहते हैं तो मे बी जितना रेन से वो रिप्लेस हो रहा है वो उतनी क्वांटिटी में ना हो जितना कि हम उसे ओवर यूज़ कर रहे हैं. ऑन द अपोजिट साइड, this was the example of renewable resources. Now the example is there regarding the non renewable resources. non renewable resources कौन से होते हैं, जो एक पर्टिकुलर सालों के बाद जैसे हम किसी चीज़ को यूज़ करते जाते हैं, दैट विल बी completed, और वी कैन से दैट विल नॉट बी एबल टू रीयूज़, कि जो ख़त्म हो गई एक बार यूज़ करते हुए, कि हमारी अर्थ पे उसका क्या है, देयर इज़ अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ दैट थिंग्स विच विल नॉट बी रिप्लेस्ड. तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, उनकी जगह पे कुछ नए रिसोर्सेज ढूंढने चाहिए, नए रिसोर्सेज जो कि उनके स्टॉक को ऐड कर सकें, क्योंकि आने वाले टाइम में ऑल दिस थिंग्स विल ऑल्सो बी रिमूव्ड. हियर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एग्जॉस्शंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. मिडल ईस्ट, USA एंड वर्ल्ड रिजर्व्स 89 बिलियन, USA में 4 हैं और वर्ल्ड में 37 है. नंबर ऑफ ईयर्स रिजर्व विल लास्ट 93
मिडल ईस्ट में, यूएस में 10 और ओवरऑल वर्ल्ड में 43। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, द रिजर्व्स ऑफ क्रूड ऑयल, कि यहाँ पर ये हमें ऐसे बता रहा है कि कितने सालों तक क्रूड ऑयल का जो स्टॉक है, अगर लोग इसी तरीके से उसको प्रेजेंट रेट पे यूज़ करते रहे तो वो मैक्सिमम 43 ईयर्स तक चलेगा ओवरऑल वर्ल्ड में। तो ओवरऑल वर्ल्ड को लेकर चलें तो डिफरेंट कंट्रीज विल फेस द डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन। जैसे कि अब हमारी कंट्री है इंडिया, इट इज़ मेनली डिपेंड अपॉन द इम्पोर्टेड ऑयल्स, कि वो दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड है, अब्रोड पे डिपेंड है, क्योंकि उनके पास जो है अपने खुद के स्पेशल एनफ स्टॉक नहीं है। और अगर ऑयल का प्राइस इंक्रीज़ हो जाता है तो देन इट विल ऑल्सो क्रिएट ए प्रॉब्लम फॉर एवरीवन। द कंट्री लाइक यूएसए जिसके लो रिजर्व्स है, तो वो भी ऑयल को किसी न किसी तरीके से रिजर्व करने की कोशिश करेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइज हेयर रिगार्डिंग द सस्टेनेबल ऑफ डेवलपमेंट, दैट which kind of the new issues regarding the nature and the process of development can be there. Consequences. Now the question arises, what do you mean by the sustainable development? The sustainable development refers to a process in which the development should be done in such a manner that it should be beneficial for the present as well as for the फ्यूचर जनरेशन, कि दोनों जनरेशन के लिए वो बेनिफिशियल हो। अब अगर हमारी एनवायरनमेंट डिग्रेड होता है, नो डाउट दे आर सेइंग कि जो एनवायरनमेंट डिग्रेड होने के कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं वो सिर्फ नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज तक ही नहीं रहे, मतलब ये पर्टिकुलर एरिया या नेशन तक ही नहीं है, ये ओवरऑल हमारे वर्ल्ड लेवल पर इंक्रीज़ हो रहे हैं। एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज़ कंपैरेटिवली ए न्यू एरिया ऑफ नॉलेज, ये एक ऐसा एरिया नॉलेज का जिसमें बहुत से साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर जो हैं, अदर सोशल साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने इकट्ठे वर्किंग की, और इसमें दे आर सेइंग दैट दिस काइंड ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्रेस इज़ much more important at all the time. As a member of society, as an individual, we need to ask where we want to go, कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे गोल्स क्या हैं, और स्पेशली फॉर द डेवलपमेंट कंट्रीज। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ an important concept in which the process, the development must be done in such a manner which must be beneficial for the future as well as for the present generation. Now the chapter is completed there. Do the exercise of chapter number 1 NCERT, and if there is any query you can call.